Hello children, how are you? All of you fine? Now last lecture in economics I explained you the position of Indian economy prior to British rule. When Britishers not came in India at that time, how we were enjoyed the large part of GDP of the world and how prosperous was our economy. Okay, in this part, two topics we will try to understand. First one is Indian economy during the British rule, and second, after the independence, what was the situation and condition of our economy. Okay, that much we will try to understand. Now let's start. The East India Company and the latter the Western ruler like French, Dutch, Portuguese and Britishers came to India attracted by the riches. India had wealth, rich scriptures and cohesive social setup. India was famous for trade in cotton, muslin, indigo, spices and metallurgy like copper, bronze, brass and other metals. However, during this time there were conflicts among the foreign rulers who want to establish their rule and own power in India. They had used armed power also. When the British established dominance over the resources were exploited, poverty increased and the Asian riches of India started enduring. However, Indian economy also attained the following. Okay, so with that, so many things were developed by Britishers here. No doubt, their ultimate aim was to exploit us, but indirectly we benefited. So let's talk it one by one. First one is the railway. Even all that point you can see in your screen also, children. So first one is the railway. British set up the railway infrastructure in India with the first rail line between the Boribandar, which is known just at present CST Chhatrapati Shivaji Terminus. It is in Mumbai. Okay, and Thane. Thane is a one district or place after Mumbai. On 16th April 1853. So it was the first line. Okay, from Victoria Terminus, its name was Victoria Terminus also at once. Okay. In 1853, by 1947, India had rail network 53,000 kilometer. Okay, and it has benefited the population of 681 lakh. So you can imagine it become one pioneer mode of transport in our country during the British rule and play a very important role to unify India. Second, roadways. The British also created a good length of road in India. They set up the public work department that is called the PWD. Even today it has existed, and whatever the public work is done, it has done through the PWD only, under which significant basic utilities were created. By the end of 19th century, there were total 2,87,482 kilometer road, which increased 4,47,105 in 1943, of which 32% were concrete, that is called the Pakka road, and 68% are the Kacha road. The ultimate aim of Britishers was to build this road to connect the remote villages to the rail and rail to port. Reason was that whatever resources were there in India, all that resources they want to pull in London, or you can say the Britain. That was the ultimate aim, and that's why they make the wave of road in our country. Next, that is the bank. Private sector bank came into being in India in 1770. By 1946, there were more than 700 banks in India.
Okay, the RBI, that is the Reserve Bank India, the apex bank of India today, was set up in the year 1935. The most important part is this, so this one you keep in your mind. Next is your social structure. Certain wrong social practices were abolished during the British rule, that you know, sati, widow remarriage, etc. Agriculture. Indian agriculture suffered from the high revenue system of jamindari. Okay, you can say it is a one kind of kalank. And another act of the British, there were exploitation of several type of poverty in the sector started increasing. To give an example, after industrial revolution in Britain, the British made Indian farmer grow more indigo to fulfill the need of the textile industry. because उन्होंने क्या बोलते हैं, हमारे खेतों को जो है अपनी जागीर समझ ली थी, वो यहाँ पे वो ग्रो करवाते थे जो उनके इंडस्ट्री को ज़रूरत थी. लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों को कितना अनाज चाहिए, उससे अंग्रेज लोगों को कोई लेना देना नहीं था. एंड यू विल बी सरप्राइज, थ्रू स्ट्राइविंग लैक्स ऑफ लैक पीपल हैज़ डाइड इन इंडिया. आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ओनली एंड ओनली बंगाल में से 7 लाख लोग विद द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से मर गए थे. क्यों? बिकॉज जो चर्चिल था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, उसने जो है इंडिया में पैदा होने वाला सारा अनाज वह अंग्रेज लोगों की तरफ से लड़ने वाले जो सैनिक थे उन लोगों के लिए रिजर्व कर लिया था. ये तो ओनली एंड ओनली आंकड़ा जो है बच्चों सिर्फ बंगाल का है 7 लाख. और वो सबसे बड़ी जो है क्या बोलते हैं, एक लॉफुल मौत जिसको हम लोग बोलते हैं, कानूनन मौत, ऐसा जो है अंग्रेज लोग जो है यहाँ पे करके गए. तो आप सोच सकते हो कि उन लोगों की जो पॉलिसी होगी हम लोगों के अगेंस्ट में कितनी क्रूअल रही होगी, कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को भी जो है साइड में रख दिया. और आज यही सब लोग ह्यूमैनिटी की बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं. एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी ये सिचुएशन है जो हमको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर. Okay, so to give the example, after the industrial revolution to Britain, the Britain made Indian farmer grow to more indigo to fulfill the need of their textile industry. However, if farmers has taken a loan to grow the indigo and incurred losses, the British government did not wipe off their loan and farmers started in incurring the accumulating debt. और इस तरह से किसान जो है कर्ज के नीचे दबने लगा. ये अंग्रेज लोगों की मेहरबानी है और उससे अभी तक हमारा पीछा छूटा नहीं है. Next is the land revenue. The East India Company got the right to collect the land revenue, you know, after the Battle of Plassey, from the king in India, which also got the right to collect the land revenue from the owners of the farming land. Later on, the British government collected land revenue from the farmers through a zamindars. The government punished the farmer who failed to give the revenue to confiscating their land by charging the fines and so on. Land revenue were high as half of the product of the farmer. अब जस्ट इमेजिन करो, कोई किसान 100 किलो अगर पैदा कर रहा है, वो उसका जो है 50% दे देता है बराबर, तो उसके पास बेचारे के पास बचेगा क्या. जबकि मुगल्स और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मराठास ये जो है जो पार्ट था ये 1/10 था, उसको चौथ या सरदेशमुखी बोलते थे. बाकी पार्ट किसान खुद अपने पास रखते थे. तो अंग्रेज लोगों ने तो उनसे भी भयंकर जो है अत्याचार यहाँ पे करने शुरू कर दिए. हाई रेट ऑफ टैक्सेस. अकॉर्डिंग टू दादाभाई नवरोजी कैलकुलेशन ऑफ 1876, द रिच paid about 8% of the national income as taxes. You will be surprised, before Britishers there was no provision of income tax in India. आप कमा रहे हो भैया और आपकी कमाई के ऊपर कोई कैसे टैक्स ले सकता है? मर मर के आप कमाओ और आपकी कमाई के ऊपर आप टैक्स पे करो, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात हुई बराबर है. लेकिन अंग्रेज लोगों ने जब सब जगह से उनका क्या बोलते हैं ये हो गया, तो उसके बाद में उन्होंने जो है इन इंसानों के इनकम के ऊपर भी अपनी नज़र रख के उसको जो है टैक्स में कन्वर्ट किया और वहाँ से भी टैक्स वसूलना शुरू किया. And taxes, while the Indian who were poor were made to pay the 15% of the national income as taxes.
हाई रेट ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम्स, यू नो दैट वेरी वेल। इसका तो तुम लोगों को सबको नॉलेज यही है कि हम लोगों का जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होता था, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो भी होता था, उसके ऊपर अंग्रेज लोग बहुत हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें बाहर बिकती नहीं थी। एंड एट द सेम टाइम उन लोगों का जो सामान वहाँ से बन के आता था वो बिल्कुल सस्ता रहता था, बिल्कुल उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं रहती थी, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं रहती थी, और उसकी वजह से उनका सामान यहाँ पे सस्ते में बिकता था। जो काम आज के ज़माने में चाइना कर रहा है ना भाई, यही काम किसी ज़माने में अंग्रेज लोग किया करते थे। ना हम तब सुधरे थे, ना हम आज सुधर रहे हैं, ना हमको तब फर्क पड़ रहा था, ना हमको आज फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम रियल में मुझे बहुत बार दुख होता है एक कॉमन इंडियन को ना, बराबर है, ये देश जो है तभी देश लगता है, तभी उसकी देशभक्ति जागती है जब क्रिकेट का मैच होता है, तब वो झंडा लेके बाहर घूमता है। बाकी नॉर्मल ट्रेंड में उसको ये देश नहीं लगता, इन चीज़ों में जो है उसको देशभक्ति दिखाई नहीं देती, तब वहाँ पे सस्ता ढूंढने जाता है कि कहाँ से सस्ता मिले, बराबर है। ये टेंडेंसी नहीं हमको बर्बाद की है, हमको बर्बाद करने वाले बाहर के लोग नहीं थे, हम वी आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर दैट। So see here, high exercise was collected on the matches, sugar, steel and silver and all such commodities. Through salt was easily available in India, the British termed as the illegal the production of salt by the Indians on seashore, and they monopolized salt trade, import salt to India and Navy. अब देखो जो चीज़ हम खुद पैदा कर रहे हैं, salt are produced by us, okay, and that the to selling it's monopoly kept by Britishers their own. पैदाइश हमारी, मोनोपोली कोई और रख रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ख़राब तरीके से अंग्रेज लोगों ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की कमर इतनी ख़राब टूटी कि आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम जो है ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये अंग्रेज लोगों की मेहरबानी है भाई, और उसके बाद में फिर हमारे वालों की मेहरबानी। For poor Indians, the protest against the high exercise duties on salt, Gandhiji started the salt satyagraha with the Dandi marches. High duty up to 15% were imposed on cotton cloth export from the India, and so that Indian cotton industry received a setback. Whereas the cotton cloth import from the Manchester in England came to India as much lower import tariff 2.5. अब देखो हमारे ऊपर 15% टैक्स लगाते थे सामान बेचने के लिए, और उनके ऊपर सिर्फ 2.5 टैक्स लगता था। आप वेरिएशन देख सकते हो कि कितना ख़राब तरीके से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करने के लिए जो है स्टेप्स लिए। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपोर्ट इंडिया long step cotton to England and sell the manufactured cloth in India. Okay. Next, industrial policy. The period of 1750 to 1830 was the period of industrial revolution in Britain. East India Company had by that time started establishing rule in India in 1858. The British government established its rule. The British government adopted the policy that made the Indian investor lost confidence. The development of Indian industries were lopsided in character, and since that only some light and consumer goods industries were started and no attention were given to the machine manufacturing and heavy engineering. Reason was that अगर ये सब इंडिया में होगा तो फिर ब्रिटेन को कैसे बेनिफिट मिलेगा? तो उनका तो अल्टीमेट एम ब्रिटेन को बेनिफिट देना था, इंडिया को थोड़ी ना देना था। तो यहाँ पे वो लोग इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करते थे, तो दे अल्टीमेट ऑल द वे दे एक्सप्लॉइटेड, हर तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग, इतना अपने को अंडरस्टैंड करना है। Heavy chemical industries and other basic key industries and policy were send raw material from India to Britain, sell goods made in Britain to India. Economic exploitation. In order to benefit their own economy, the East India Company and later the British government adopted the policy which exploited the Indian resources and promoted British industries. Indian agriculture was also exploited by high land revenue. फिर exploitation of artisans, विलेज आर्टिशियंस जो गांव में रहने वाले जो कलाकार लोग थे, जैसे कि जिसको हम लोग हिंदी में बढ़ई बोलते हैं, लुहार बोलते हैं, सुनार बोलते हैं, ये सब लोगों को आर्टिशियंस कहा जाता था। The East India Company exploited the artisans by obtaining the goods from them 15 to 40% lower price, बराबर है, जितना उनका कॉस्ट लगता था उस कॉस्ट से भी कम में उनको पेमेंट करते थे, और उनसे वो चीज़ लेके हाई प्राइस में बाहर बेचते थे at a highest price and made high profit.
Beside, after the British government rule, they started selling in India cheap goods manufactured in England and ruined the small scale industry. उन्होंने हमारी इकोनॉमी की पूरी बैकबोन तोड़ के रख दी, ऐसा मैं बोलूँ तो कोई हाइपरबोल नहीं होगा यहाँ पर. And now what was their investment pattern? The British made only those investment in India which benefited Britain. For example, railway and road network was created to help movement. उनकी मजबूरी थी, बाकी वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो, लेकिन उनको मालूम था कि भाई अब राजस्थान के किसी रिमोट एरिया में माइंस हैं तो वहाँ से उसको अगर मुंबई तक पोर्ट तक लेके आना है तो भैया रेल लाइन तो लगानी पड़ेगी. इस चक्कर में उन लोगों ने रेलवे लाइन लगाई. यहाँ पे उनको कोई हमसे प्यार मोहब्बत नहीं जाग गई थी कि हाँ भाई इन लोगों का कुछ भला कर देगा क्या, और लेकिन हमको उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिला. So raw material and goods from the industry. Investment in education was made to educate personnel to run the British. अगर एजुकेशन में भी उन्होंने 4 यूनिवर्सिटीज़ ओपन की तो अल्टीमेट एम यही था कि उनको नौकर लोगों का एक ग्रुप चाहिए था ताकि ब्रिटेन से आउटसोर्स नहीं करना पड़े, यहीं से मिल जाए तो सस्ते में काम सा लट जाए उनका. इज इट क्लियर? Investment in education was made to educate personnel means labor, to learn the British administration, and Indian were prevented from get technical education. They started collected for medicine and civil engineering in India for their own benefit. They needed civil engineer for public work department in India and in Britain. They did not promote studies in science and technology in India. उनको कहाँ यहाँ पे साइंटिस्ट खड़े करने थे भाई, बराबर है. Thus they made selective investment in India. Next is your payment burden. Various payments were made to British from India become beside huge salaries to British personnel. They include the home charge. They were huge amount of money which Indian paid toward the administration, maintenance of army. वो ये सारे के सारे टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज किए थे. मजे वो लोग लेंगे, उसका खर्चा हम उठाएंगे, बराबर है. एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस एंड आर्मी वेयर वॉर एक्सपेंसेस. लड़ाई वो करे किसी के साथ, उसका हर्जाना हम भरें. पेंशंस और टू रिटायर ऑफिसर्स एंड अदर एक्सपेंसेस incurred by the British to maintain their own colony. These were called the home charges and were paid almost entirely by India. The home charges were made of the 3 components: interest payment for debt incurred in maintaining Indian colony, interest on railway and civil and military charges. Finally, when British left India in 1947, a rich, prosperous, a great country had ruined totally and converted into a poor and beggar country. एक गरीब और भिखारी देश में जो है तब्दील हो चुका था, जहाँ पर पिन से लेकर प्लेन सब कुछ हमको बाहर से मंगवाना पड़ता था. दैट वाज द सिचुएशन. मैंने बोला ना कि अंग्रेज लोगों ने हम लोगों को जो है वो गुजराती में शेरडी की तरह इस्तेमाल किया. जितना रस निकाल सकते थे पूरा रस निकाल लिया. जब कुच्चा बच गया, उनको लगा अब यहाँ से कुछ लेने जैसा है नहीं, तब वो हमको छोड़ के गए. इसलिए इस खुशफहमी में मत रहना भैया कि हमको आज़ादी जो है हम लोगों ने ली है करके, हमको आज़ादी से फेंक दी है भाई, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, छोड़ो मारो गोली करके. ये सिचुएशन में अंग्रेज हमारी करके गए थे. बहुत ख़राब, एक कड़वा सच है, लेकिन ये जो है एक फैक्टफुल सच है. ठीक है. अब इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी क्या सिचुएशन हुई, लेट्स टॉक अबाउट इट. इसके बारे में बात करते हैं. ओके, चलिए. नाउ सी, after independence, how our Indian economy started develop slowly, very slowly. Okay, it's scenario I am going to explain you here. So let's start with the per capita income. According to Human Development Report, the per capita income in India 2013 was purchasing power $5,150. It is low, but it is, we can say, better. पहले से बेहतर है भैया. Okay, which was lower than the developed countries but also lower than many developing countries like China. अब चाइना अपने से सीधा डबल ही है, देख लो जरा. श्रीलंका अपने से इतना छोटा कंट्री है लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम हम लोगों से बेहतर है. आपके पेज नंबर 80 में जो एक टेबल दिया हुआ है, आप इसको जो है अगर आप रेफ़र करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया. यहाँ पे आप लोग देखो जरा कंट्री
बराबर है। नॉर्वे देखो उसकी पर कैपिटा इनकम 63,900 के करीब करीब है, और उसके कंपेयर में इंडिया देखो कहाँ पे आके टिक रहा है। तो लोग हमसे कितने रिच होंगे, इससे यू कैन गेट द आइडिया, आपको ये आइडिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। इंडिया इज एन एग्रियन नेशन. द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज डेवलपमेंट हैज़ ग्रेजुअली declined but is still relatively higher, depositing lower economic development nation have lesser percentage development in agriculture. Agriculture and higher in the industrial and service sector. At the time of independence, 72% of the population was dependent on agriculture, which declined to 58% in 2001 and 2 and 49% in 2013-14. Next is your industry. The contribution of industrial sector in development and national income has increased over time. However, India is called the completely industrialized nation from the development criteria. The share of industrial sector of employment is 10.6% in 1950-51. देखो इससे आपको अंदाजा आएगा कि हमारी क्या सिचुएशन है, which increased 18.2% in 2001. अब जस्ट इमेजिन करो कि हम 40 सालों में सिर्फ 10 से 18% जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, तो कितनी हमारी रफ्तार स्लो है यहाँ पे, हमको कितना कर लेना चाहिए था. The further 24.3% in 2011-12. Okay, national income was 16.6 in 50-51 and 26 in 2013-14. तो उससे आप अंदाजा लगाओ कितना स्लो हमारा प्रोग्रेस है. Besides, the industrial sector contribute 2/3 of the export earning the present time. Service sector. सर्विस सेक्टर मतलब कौन सा, तुमको मालूम है, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब. ओके, 1951 17.3%. In 2001 it was 25.2%. 11-12 it was 27,000. अब जस्ट इमेजिन करो 17 से 27% हम लोग, हार्डली 10% हम लोग 50 सालों में बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं. द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम GDP 51 was 30.3%. In 1980-81 it was 38%. 2001 50% and 2014-50 it is a 52%. यहाँ पर आप कुछ अच्छा बेहतर ग्रोथ देख पा रहे हो, बाकी सब में तो कोई खास नहीं है. फिर है पॉपुलेशन. अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहा. जितनी हम प्रोग्रेस करते गए उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, और उसने क्या किया, हमारे प्रोग्रेस को ग्रहण लगा दिया. बराबर है, वो जो है उसमें ढक गया बिल्कुल ही, हमारी प्रोग्रेस दिखी ही नहीं. There has been average annual increase in 1.5% in population after independence and its significant population explosion. The population of India in 1900 was 23.84 crore. In 2011 how much it is? 121.25. और आज की तारीख में मोदी जी क्या बोलते हैं? 130 करोड़ भारतीय. आप जस्ट इमेजिन करो क्या रैपिडली हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, और उसने हमारे पूरे डेवलपमेंट प्रोग्राम की ऐसी तैसी फिरा दी भाई. फिर है अनएम्प्लॉयमेंट. डेफिनेटली ग्रोथ, और अगर ऐसा खतरनाक रहेगा तो दो चीज़ें तो अपने आप सामने बढ़ के आएंगी. वन इज़ द पॉवर्टी एंड सेकंड इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, चलो पॉवर्टी को देखते हैं. यहाँ पे population living below poverty line has declined over a year. It is still considered the high. In 1970, 73, 74, okay, the poverty line was 54.9. अभी वो वहाँ से घट के 45.3, 93, 94 में है. अगर आज की तारीख में बात करोगे तो 21.9. यानी आप यूँ समझो आज भी इंडिया में नहीं तो कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है भाई. ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है. समझ में आएगी नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट देखो यहाँ पे जरा. अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया in 1951 33 lakh people were unemployed as per the national sample survey. In 1999-2000 7.13 of the total population unemployed. 7 point मतलब आप यूँ समझ लो अगर 100 करोड़ की जनसंख्या है तो 7 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं अपने देश में. बराबर है.
तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हो कितनी हमारी अभी भी पोजीशन ख़राब है, बराबर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो तो इंडिया अभी भी बहुत पीछे है, हेल्थ में, बराबर है, हर चीज़ में हम लोग अभी भी दुनिया से पीछे। आप ये जस्ट इसके ऊपर ज़रा एक नज़र घुमाओ तो आपको आइडिया आएगा। यहाँ पे आप देख सकोगे ये जो पैराग्राफ है आप लोगों का, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला, इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरे ख्याल से, बराबर है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको जो है अंदाज़ा आएगा कि क्या हमारी हालत है। मैं जो है लेटेस्ट आपको पढ़ के दिखाता हूँ। 2013 में हमारा रैंक जो है HDI में दुनिया में 136, हम लोग टॉप 100 में भी नहीं है हम लोग। जस्ट इमेजिन करो कि हमारी हालत कितनी पतली है अभी भी भाई, बराबर है, और हमको कितना प्रोग्रेस करना है, और उसमें हिंडर्स तो कितने सारे हैं, बराबर है। ये सबसे बड़ा पंगा है हमारे देश में। सो challenges are there and we have to overcome that, but still our progress is, we can say, ठीक है, ओके, अच्छा है, ठीक है। So we are now developing country. So what are the characteristics of developing country? That entire things we will understand in next lecture, and that will be the last lecture of this. Okay, bye, see you all of you, take care.